It's the most ancient instrument that mankind knows, the Veena. And it's very, very melodious. It is not just an instrument, it has a philosophy also. It has the same number of, like our spinal cord, it has all the 24 segments, just like our spinal cord. And then the end of that turns around, that represents the Kundalini. So one represents the cranial side, another represents the sacrum. 4 strings representing the 4 Vedas, and then 3 strings that is for the Tala, that represents the 3 gunas. And so that whole philosophy of life is embedded in that instrument. It's very nice, beautifully sung, beautifully played. And the Morsing also, the women's team, the whole women's team. And Mridangam, give a big hand for all of them. Very nice. Beautiful. There is a story about a monk. There is a monk who was very devoted to Lord Shiva. He loved just the quietness, the serenity, and he ran away from the world. He says, I didn't want to do anything with the world. Because world is always trouble, right? If there is something good also, it's trouble. Something bad also, it's a trouble. So everything here is a trouble. So he just wants to be recluse and be Shiva. So he was worshipping Shiva. But he found that always Parvati is next to Shiva. He didn't like Parvati at all. He said the whole Maya, the whole problem is because of Parvati. The world is all 3 gunas, sattva, rajas, tamas. And he wants to be nirgun, beyond the gunas. So he said, I don't want to do anything with Parvati. So I'm never going to worship her. Only Shiva. But they were always together, what to do? So then he assumed a form of a bee so that he could just go around only Shiva, go in between Parvati and Shiva, and he would circumambulate Shiva, and he was happy doing this. And this really annoyed Parvati, and Shiva also said, I had to teach this guy a lesson. It's like people, say, oh, we love Gurudev, but the others I don't like. No, Gurudev is okay, but the 3 gunas are no. So, that is the mindset. He doesn't know Gurudev comes with the whole package. Comes with all the paraphernalia, all type of people are there. कहते ना शिव जी की बारात. I'll say it in Hindi also. So all different things are there. They'll always be there. Wherever there is something good, there will be always something not so good also along with that. So when Shiva is there, then Parvati is there, the Triguna is there, Sattva, Rajas, Tamas. All these qualities are there, bound to be there. The world has bound to be there. But the saint was trying to circumambulate Shiva only, assuming a form of bee and sit and discard Parvati. It is at this time, Shiva said, okay, now I'm going to play a trick. And he gave half of his body to Parvati. That they became one, Ardhanarishwar, half male and half female. Now that monk, that saint could not do anything. That monk could not. He has to circumambulate, accept. And that is the story of Ardhanarishwar, when
Shiva and Parvati became one. They, the male chauvinists always say, oh, women should be kept away, women should not be. Almost in all the religions, they had outcasted women. But in the ancient time, that was not the case. Women were given the first place as Mother Divine. But this Rishi was little bit of that type. He just wanted to be only with the male and not with the women. And so Shiva said, here half of me is Parvati, now what you will do? So he had no choice but to surrender and circumambulate, and then he dropped his ego and said, yes, it was my wrong understanding, my misconceptions. It was in my brain. That then the story of Ardhanarishwar, that's why Shiva half and Parvati. He gave half of his body to the Parvati. It's a beautiful way to show the gender equality from ancient times. Cannot discriminate women. In fact, it's always say Gauri Shankar, Uma Shankar. First comes the female and then the male. Sita Ram, Radha Krishna. Nobody says Krishna Radha. Says first comes Radha and then Krishna. Lakshmi Narayan. No one says Narayan Lakshmi. It's always Lakshmi Narayan. So women are given more priority and importance from ancient times. I think that is coming back. That tradition is coming back to give. World over, it has been here. World over, it has been now being recognized. एक पंडित जी हुआ करते थे, 92 साल के थे उन दिनों, 98 साल के थे, 80 की बात है। वो कहते थे हमसे, महाराज, गुरु महाराज, किसी भी संस्था में 12 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हमने कहा अच्छा, 12 लोग कैसे? 4 अच्छे, 4 कच्चे, 4 लुच्चे। बोलते थे कि 12 लोगों की बनती है महाराज ये दुनिया, और ये संस्थाएं, ये दुनिया बनती है ऐसे, तो सब तरह के लोग होते हैं। मगर एक संत स्वभाव के व्यक्ति इन सब झंझट से भागना चाहता, दूर रहना चाहता, उनको कुछ पसंद ही नहीं है। हम क्यों पड़े हैं झंझट में भाई? अभी भी दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा कुछ भी आगे पीछे हो तो भाग जाता है, तो कहते हैं छोड़ के भागो। कहाँ कौन झमेले ले गए, झंझट ले गए, हम अपने शांति से रहेंगे। तो इस तरह से वो संत भी भागने के चक्कर में थे, भागे हुए थे, और वो सिर्फ शिव जी को भंवर बन के प्रदक्षिणा करते थे। शिव जी भी बड़े चालू है, भोले भी है, भोलेनाथ भी है, मगर उन्होंने देखा पार्वती से ना असंतुष्ट थी। अरे हमारे आपके बीच में कोई हो ही नहीं सकता, ये भंवर क्यों बीच में कौन? ये कौन आ गया महात्मा, पति पत्नी और वो ये वो कौन है बीच में आ गया हमारे और आपके, हमारे आपके बीच में ऐसे आके चक्कर कर रहे। तब शिव जी को तो अपनी भार्या को कुछ तो करना ही पड़ता है। तब कहते हाँ भाई सही बात है, मैं क्या करूं, मैं भक्तों को तो समझा नहीं पाऊंगा। ये काम करते हैं, एक तरकीब निकालते, चलो मेरा आधा शरीर तुम ले लो, वैसे तो मन तो पूरा तुमने ले ही लिया, शिव जी के मन में तो पूरा पार्वती ही बैठी है, मेरे आत्मा तुमने ले लिया, मन ले लिया, अब शरीर में भी आधा तुम ले लो, अब देखते हैं। तब हुआ अर्धनारीश्वर, शिव जी आधे हो गए और पार्वती आधे हो गए।
तब उस ऋषि को, मुनि को ज्ञानोदय हुआ। अब सब शिवमय है, शक्ति शिव के बिना नहीं है, शिव शक्ति के बिना नहीं है। ऐसा करके उनको ज्ञान हुआ, वो मुक्त हुए। फिर उन्होंने प्रदक्षिणा करी, उनके शरणागत हुए। इस तरह से अर्धनारीश्वर की कहानी है। माने अनादि काल से इसका तथ्य यही है, अनादि काल से ये बात है कि संसार को उसकी अपनी सारी कमियों के साथ स्वीकार करें। कमी तो रहेगी संसार में, और स्त्री पुरुष का भेद ना करिए, उन दोनों को समान अधिकार देना चाहिए। स्त्री पुरुष को समान अधिकार होना है। तो ये लिंग भेद न करे, ये तथ्य है। ये अच्छा, अभी तो लोग बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट, ये तो कब का किया हुआ एम्पावरमेंट, क्या करना है। मैं पहले से तो महिला तो आगे होती ही है सब में, और होना भी है। इस तरह से आया है। इसलिए देखो, सारा जो प्रमुख डिपार्टमेंट है वो सब महिलाओं के पास है। डिफेंस मिनिस्ट्री वो दुर्गा ने लेके बैठी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री वो सरस्वती के पास है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री वो लक्ष्मी जी के पास है। और बचा क्या है? इसके बिना तो चलेगा नहीं, ये तीनों मिनिस्ट्री तो चलता है सब काम। और वाटर रिसोर्स उसका भी मिनिस्ट्री गंगा जी के पास हो गया। हाँ, वाटर रिसोर्स का हो गया उनके पास। बाकी इसी में आ जाता है सारा, इंडस्ट्री सब फाइनेंस में आ जाता है। कुछ बचा ही नहीं, फिर शिव जी क्या करेंगे? शक्ति के बिना शिव नहीं है, और शिव के बिना शक्ति, ये तथ्य है। ठीक है, फिर आज इतना काफी है। तो प्रसन्न रहो। और समाज में होता रहता है, समस्याएं आती रहती है, सबका अपना अपना कर्म लेके आए हैं, झेलते रहेंगे। अरे उनका ये है, भाई का ये समस्या है, बहन का वो समस्या है, जीजा जी का वो समस्या है, भांजे का ये समस्या। ये सब समस्या झंझट के बिगाड़ संसार होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहता है। मगर तुम इन सब के बीच में आनंद भी पहचानो। आनंद भी है कि इन सब के भीतर जब हम ये देखते हैं हमारे ऊपर कृपा बरस रही है, तो मन शांत होता है, तृप्त होता है। और जब कुछ भी नहीं करते, कोई ना साधना करते, ना कोई जाप करते, ना ध्यान करते, ना भजन करते, इतनी जड़ता आ जाती जीवन में, घोर जड़ता। इस जड़ता को लेके फिर दुखी दुख, और कुछ दूसरा कुछ होता है जीवन। तमोगुण, जड़ता, और आके अच्छा गुरु जी से आशीर्वाद ले लेंगे। गुरु जी से तो ठीक है आशीर्वाद ले लोगे, मगर बर्तन तुम उसको सीधा रखोगे ना ठीक रहेगा, दूध लेके उल्टा कर दोगे तो नीचे गिर जाएगा सारा। जितना आशीर्वाद लेते हो उसको संभालो, आशीर्वाद तो खूब मिल रहा है, और अपना बर्तन सीधा रखोगे तो और उसमें गिरेगा, है ना। तो यही करना चाहिए।